Now, today we're going to discuss one type question, and that is, and the question is, and this is the last type question we have in this chapter, that is definite integral, properties of definite integral. Okay. So the question is, everyone note down. Prove that 0 to pi by 2 log of sine x dx equals to 0 to pi by 2 log cos x dx, and we have to show that this is equals to minus pi by 2 log 2. Okay, so everyone pay attention here. देखो इस क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, ध्यान से एक बार नोट करना. वी विल टेक LHS फर्स्ट. और LHS इसको लेकर के हम इसको I ले लेंगे. मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैंने I ले लिया. And let me mark this as equation number 1. Now everyone tell me, just note down how to prove from left hand side, how to prove this part. Anyone who can tell me? Anyone who can give me an idea how to prove that 0 to pi by 2 log sin x is equals to 0 to pi by 2 log cos x? Anyone? A minus x property. मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 to a का प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं. Now applying 0 to a, fx dx equals to 0 to a f of a minus x dx. So what I did, I just applied this property 0 to a in this the given integrand, which I took it from the left hand side of the proof part. So if I apply 0 to a ka property, we'll get 0 to pi by 2. And you know that when we apply 0 to a property, what we do? We simply replace x with, we simply replace x with x with pi by 2 minus x, मतलब a minus x. और यहाँ पे a क्या है बताना एक बार. What is a here? Can you tell me? A is pi by 2. So मैंने क्या किया, a के जगह x के जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, a minus x. x के जगह मैंने a minus x रिप्लेस कर दिया. And what is the value of a in this particular integrand? It is pi by 2. So can you tell me what is sine 90 minus theta? Sine 90 minus theta is how much? Cos theta. So we are getting log cos x dx. Let me mark it as 2. ठीक है, मतलब हम लोगों ने एक पार्ट तो प्रूव कर दिया. अब हमको लास्ट में क्या प्रूव करना है? माइनस पाई बाई 2 log 2 प्रूव करना है. इसके बाद मैं चाहता हूं कोई भी कॉपी मत करो, ध्यान देना है. इसके बाद now what I'll be doing, I'll be adding equation number 1 and equation number 2. Adding equation 1 and equation number 2. See, if we add both the equations, we'll get on the left hand side I plus I equals to how much? 2i. And on the right hand side, we'll get 0 to pi by 2 log sin x plus log of cos x. Okay. After adding, we have I equals to, if I take this 2 on the right hand side, we are getting half into 0 to pi by 2. Now what is log a plus log b? Anyone who can tell me what is log a plus log b? अगर मान लो दो लॉगरिथम है और दोनों का बेस सेम है, बेस क्या है दोनों का e, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होगा बताओ तो? मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो गया log of sin x into cos x हो गया. अब देखो cos x into sin x को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई और ये 2 हटाने के लिए 2 से मैंने डिवाइड कर दिया. Now what is the formula of 2 sin x cos x? Sin 2x. So 2 sin x cos x is sin 2x, whole thing divided by 2. What is log of a by b? Tell me. Log a minus log. Log a minus log b.
So we have 0 to pi by 2 log of sine 2x minus log 2. ओके, अब हम इसको सेपरेट मतलब अलग अलग इंटीग्रेट करें. देखो अब हम लोग लगभग we have just completed 60% of the question solution. Okay, now how do I come to know that I've completed 60% of the solution? देखो हम बता रहे इसका इंडिकेटर क्या है. देखो हाफ log 2 मिल गया, चेक कर लो. हम लोग को आंसर में क्या चाहिए बताओ तो. वी नीड माइनस पाई बाई 2 log 2. तो माइनस पाई बाई 2 log 2 का हम लोग को हाफ log 2 मिल चुका है. देखो एक बार, ठीक है. मैंने क्या किया देखना एक बार. व्हाट आई डिड हियर, मैंने इंटीग्रेंड को इस पे अलग, ये ना देखो, और इस पे अलग अप्लाई कर दिया, और हाफ तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. log 2 इज अ कांस्टेंट, तो मैंने log 2 को बाहर रख दिया. So we have half 0 to pi by 2 log sine 2x dx. What is integration of 1 dx? Let's apply limit. So we have 0 to pi by 2. So we have I equals to half 0 to pi by 2 log sine 2x dx. Okay, if I apply limit, upper limit here, if I apply upper limit here at the place of x and then lower limit, what is pi by 2 minus 0? It is pi by 2. अब तुम लोग नोट करना, देखो आंसर अपने लोग अभी हम लोग लगभग आंसर के लास्ट वाली लाइन में है, क्योंकि देखो तुमको क्या प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log, है कि नहीं. और यहाँ पे क्या है बताओ तो, पाई बाई 4 log 2 है. ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस वाले पार्ट का कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा. मतलब क्या एडजस्टमेंट्स, देखो ये वाले पार्ट का हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा. क्या देखना है एक बार, जस्ट लास्ट डे का जो पार्ट है वो अपनी कॉपी में सबको चेक करना है. और मैंने लास्ट डे ये वाला पार्ट को मैंने बोला था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. यू रिमेंबर व्हाट वाज दैट? इट वाज 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx. Do you remember that? ये मैंने प्रूफ करना सिखाया था. इट इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx. Do you remember this part? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा पता है, ये चीज को पूरा वो लास्ट वाले डे का जो सम है उस पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करके शो करो कि ये 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx के बराबर है. डू यू नो व्हाई? अगर हम शो कर दिए कि ये 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx के बराबर है, तो जस्ट चेक इक्वेशन नंबर 1. व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 इज 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx. तो अगर हम लोग ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को शो कर देते हैं कि ये 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx के बराबर है, तो उस पूरे जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? आई रिप्लेस कर सकते हैं. तो मैंने कहा था ना कि वो सम मास्टर सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है. तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट डे का पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे. सबसे पहला स्टेप क्या था, देखो 2x को t लेने का. चेक कर लो अपने अपनी कॉपी में. सो वी हैव dx इक्वल्स टू हाउ मच, हाफ dt. देन यू हैव टू चेंज द लिमिट आल्सो. So when x equal to 0, the value of t becomes, and when x equals to pi by 2, the value of t becomes pi. So I becomes half. See, at the place of x equal to 0, we'll be replacing t equals to 0. At the place of x equals to pi by 2, we'll be replacing pi. और जहां पे 2x है वहां पे t लगा देते हैं. dx की जगह क्या लग जाएगा, हाफ dt माइनस पाई बाई 4 log 2. समझ में? पाई बाई 4 कैसे है? पाई इंटू 1 इज पाई, 2 इंटू 2 इज हाउ मच, 4. नाउ वी ऑल नो दैट 0 टू पाई. अब देखो ये हाफ इंटू हाफ कितना हो गया, 1 बाई 4 हो गया. ठीक है, 1 बाई 4. अब तुमको पता है कि 0 टू पाई log sin t dt is same as what? 0 to pi log sin x dx. ठीक है, याद करो लास्ट डे हम लोगों ने ये चीज किया था. ठीक है, and you can write down since a to b ft dt is same as a to b fx dx और fy dy anything. ओके, अब देखो यहाँ पे अब हमको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा पता है? नेक्स्ट अब हम लोग को लिमिट चेंज करना पड़ेगा. डू यू रिमेंबर दैट पार्ट? लास्ट डे हम लोगों ने किया था, उसके बाद लिमिट को चेंज करना है. तो लिमिट को चेंज करने के लिए 0 टू किस फॉर्म में लाना है बताओ? यहाँ 0 टू पाई है, तो 0 टू पाई को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? 0 टू a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. याद है?
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, I equals to 1/4. Can I write pi as 2 into pi by 2? Minus pi by 4 log 2. उसके बाद अब हमको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा क्या कि if f of x is log of sin x, what is f of 2a minus x? What is f of 2a minus x? So if you check your copy, we are just copying the whole thing which we did in the last class. 2 cancel हो गया, sin pi minus x कितना हो जाएगा बताओ, sin x. So we are finding that it is equal to f of x. So since f of 2a minus x is equals to f of x, so can I write I equals to, ये जो आगे 1/4 है ये तो 1/4 रहेगा ही, ये जो 0 to 2a है a को यहाँ लिखेंगे 2 को आगे प्रोडक्ट फॉर्म में लाएंगे और ये हो जाएगा log of sin x dx minus pi by 4 log 2. On simplification we are getting half 0 to pi by 2 log sin x dx. Now check कर लो एक बार equation number 1 में, everyone check equation number 1. What is equation number 1? Can you tell me? It is 0 to, equation number 1 is 0 to pi by 2 log sin x dx. तो इसको मैंने I से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? You can write down from equation number 1. अब देखो ये हाफ आई लेफ्ट में आ गया तो I माइनस हाफ आई कितना हो जाएगा, हाफ आई. यहाँ पे हाफ आई है, यहाँ पे माइनस pi by 4 log 2 है, तो बताओ तो सिंप्लीफाई होके कितना हो जाएगा, माइनस pi by 2 log 2. Now this is what we have on the right hand side. तो ये प्रूफ हो गया, तो है ना ये सब. मैंने बोला था ना कि लास्ट अभी तो शुरू होगा, देखो कितने पेज का काम है, ठीक है? एक बार ये कॉपी करो, कॉपी करके इसको एक बार मतलब इस तरह का हम लोग 2-3 सम करेंगे तब जाके ये पूरा क्लियर होगा. पहले स्टार्ट से एकदम स्टार्टिंग से कॉपी करो. Now next type, X elimination type. Now what is X elimination type? Everyone note down. In X elimination type, you will have X into some function. मतलब X और कोई एक और फंक्शन आपस में क्या फॉर्म में होगा बताओ तो, प्रोडक्ट फॉर्म में होगा. Now how to check whether the given question is X elimination type only. जबकि अगर मान लो तुम्हारे पास दो चीजों का प्रोडक्ट है तो तुम यूवी रूल भी अप्लाई कर सकते हो, पर तुमको कैसे पता चलेगा कि ये X elimination टाइप ही है. देखो ध्यान देना, if after applying the property, if after applying the property fx remains unchanged, it means the given question is of the type, is of the form X elimination. Okay, else apply by parts. ठीक है, तो अगर मान लो x के साथ जो फंक्शन है, अगर हम इस पूरे में प्रॉपर्टी अप्लाई किए और x के साथ जो फंक्शन है अगर वो फंक्शन अनचेंज रहा, ठीक है, अगर वो फंक्शन अनचेंज रहा, देखो यहाँ लिखा हुआ है remains unchanged, it means that this particular question is of the form X elimination. नहीं तो क्या करना है हम लोग को, बाई पार्ट्स लगाना. अब ध्यान से एक सम देखना. So let us take one question, like for example we have x cos square x. Suppose the question is 0 to pi x cos square x, and we have to show that it is equals to pi square by 4. ओके, तो क्या करना है देखना है. सबसे पहले हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है? अब ये
देखो इसमें x है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये या तो x एलिमिनेशन टाइप से सॉल्व करना है या फिर इसमें बाई पार्ट्स लगा। बट हाउ टू चेक कि ये x एलिमिनेशन टाइप है या नहीं? सो लेट अस अप्लाई द प्रॉपर्टी नाउ। अप्लाई 0 to a fx dx equals to 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, अगर हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई करने का मतलब है जहां पे x है वहां पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, पाई माइनस एक्स। Now everyone tell me what is cos pi minus x? Anyone who can tell me? Cos 180 minus theta is how much? What is cos 180 minus theta? Minus cos theta, correct. It is minus cos theta. But minus cos x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? समझ में आया ना, ये होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब क्या ये x एलिमिनेशन टाइप है या इसमें बाई पार्ट्स लगाना है? बताओ तो, जो मैंने कंडीशन दिया था उसके हिसाब से क्या ये x एलिमिनेशन टाइप में कैटेगरी में फॉल करे? क्या ये इस x एलिमिनेशन टाइप में है या फिर इसमें हमको बाई पार्ट्स लगाना है? बताओ। क्योंकि x एलिमिनेशन में क्या होगा कि जो भी x के साथ जो भी फंक्शन होगा, अगर उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद वो वापस से सेम रह गया, इसका मतलब ये x एलिमिनेशन टाइप है। तो हम इसमें क्या करेंगे, नाउ विल बी एडिंग इक्वेशन 1 and 2। if we add both the equations, we will get I plus I equals to how much, 2i, और राइट साइड में आ जाएगा 0 to pi by 2 log sin x plus, I'm sorry, अभी भी दिमाग में वही संको मेरे 0 to pi x cos square x plus pi minus x cos square x। ऑलराइट, अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है बताना एक बार, व्हाट इज कॉमन इन बोथ दिस, आई मीन लाइक दिस एंड दिस, इन दोनों एक्सप्रेशंस में cos square x। अब तुम वही देखो, अगर मान लो ये cos square x चेंज होके और sin square x हो गया रहता, तो क्या मैं ये कॉमन ले पाता ऐड करके? इसीलिए मैंने हमेशा क्या, मतलब इसमें मैंने कंडीशन क्या लिखा है कि x के साथ जो फंक्शन है अगर वो अनचेंज रहता है तभी ये x एलिमिनेशन टाइप। क्यों? क्योंकि अगर अनचेंज रहेगा तभी हम कॉमन ले पाएंगे, और कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो पार्ट जिसमें x कैंसिल हो जाएगा। देखो कॉमन लेने के बाद x कैंसिल हो जा रहा है, देखो, और इसीलिए इस टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड x एलिमिनेशन टाइप। पाई कांस्टेंट है से बाहर अंदर cos square x। हाउ टू इंटीग्रेट cos square x? पाई बाई 4 हो जाएगा। What is integration of 1 dx? Integration of 1 dx is x. Integration of cos 2x is sin 2x into half. Now let us put at the place of x upper limit and then lower limit. ठीक है, what is the value of sin 2 pi? 0 होता है, और ये तो पार्ट 0 ही हो गया, ठीक है पूरा। तो आंसर कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाई 2। यही शो करना था ना, क्या प्रूफ करना था, पाई स्क्वायर बाई, सॉरी ये कैसे, तो सॉरी पाई बाई 4 था ना, ठीक है। ये पाई बाई 4 था, पाई स्क्वायर बाई 4। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो मैं पहला पेज एक बार मतलब मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, एवरीवन कॉपी डाउन। So the next question is, everyone try this up. It is 0 to pi x tan x by sec x plus cos x
and you have to show that it is equals to pi square by 4. ठीक है, सबसे बेस्ट है सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा. ठीक है, दैट विल बी बेटर. So I'm taking LHS, and in LHS we have 0 to pi. After you express everything in terms of sine and cos, you'll get x sin x by 1 plus cos square x. Second, check कर लो. Okay. And let me mark it as equation number 1. Now see, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? Now we are going to like eliminate x, because if I apply 0 to a property here, we'll find that fx will remain same. What is sin pi minus x? It is sin x. What is cos pi minus x? Minus cos x, लेकिन उसका होल स्क्वायर क्या होगा? Plus cos square x. Let us add both the equations. So we find that I plus I will become 2i. If you take sin square x by, sorry, sin x, okay. If you take sin x by 1 plus cos square x common, you'll find that x will get eliminated, okay. Are you getting everyone? Actually, मैं वो step directly देता हूँ. x एलिमिनेट होने के बाद बच जाएगा pi times sin x by 1 plus cos square x. Let us keep pi outside. So we have pi by 2, 0 to pi sin x by 1 plus cos square x. Now, can you tell me one thing, that in this particular sum, what do I need to do now? Substitute what? Cos x with t, because ddx of cos x is minus sin x. Minus के लिए कोई दिक्कत नहीं है. लोग को लिमिट भी चेंज करना है. When x equal to 0, the value of t becomes 1, because cos 0 क्या होता है? देखो यहाँ पे cos 0 1 होता है. And when the value of x is pi, the value of t becomes, I'm sorry, I have written 0 by mistake, okay. When the value of x is 0, the value of t is 1. And when the value of x is pi, the value of t is what? Minus 1, because cos pi कितना होता है? Minus 1 होता है. So I becomes pi by 2, 1, and the upper limit is minus 1. Sin x dx will be replaced with dt, minus dt. And in the denominator, you get 1 by 1 plus t square. What is integration of 1 by 1 plus t square? Tan inverse t. Once apply upper limit, एक बार जहां पे t है वहां पे upper limit लगाते हैं हम लोग, और एक बार जहां t है वहां पे lower limit लगाते हैं. ठीक है. Now tell me, याद है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला थोड़ा बहुत? Tan inverse of -1 क्या होता है?
माइनस tan इनवर्स वन होता है ना, सॉरी पाई माइनस होता है ना, सॉरी माइनस होता है, I'm sorry, पाई बाई 2 का पाई का होता है, ठीक है। व्हाट इज 1 tan के किस एंगल का वैल्यू होता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -π/4 -π/4 कितना हो जाएगा, -π/2 है कि नहीं, इनटू पाई -π/2 बिकम्स व्हाट π²/4, ये प्रूव करना है ना, ओके।